1. Critique, noun. तबसरा, तनकीद, जायजा. A detailed analysis and assessment of something, especially a literary, philosophical, or political theory. Synonyms: analysis, evaluation, assessment, appraisal, appreciation, review, write-up, criticism. 2. Restrained, adjective. ज़ब्त शुदा, काबू में रखना. Characterized by reserve or moderation, unemotional or dispassionate. Synonyms: self-controlled, controlled, self-restrained, moderate, not given to excesses, sober. 3. Anarchy, noun. लाकानूनियत, इंतशार. A state of disorder due to absence or non-recognition of authority or other controlling systems. Synonyms: lawlessness, absence of government, nihilism, mobocracy, revolution, insurrection, riot. 4. Concur, verb. मुत्तफिक होना, एक साथ होना, हमख्याल होना. Be of the same opinion, agree. Synonyms: agree, be in agreement, be in accord, be in accordance, accord, go along, fall in. 5. Deliberate, adjective. गौर व खोज करना, सोचा समझा. Done consciously and intentionally. Synonyms: intentional, calculated, conscious, done on purpose, intended, planned, meant. 6. Obsolete, adjective. मतरूक, गैर मुरव्वज, जो इस्तेमाल में ना हो. No longer produced or used, out of date. Synonyms: out of date, outdated, outmoded, old-fashioned, no longer in use, disused, fallen into disuse. 7. Antithetical, adjective. मुतजाद, Directly opposed or contrasted, mutually incompatible. Synonyms: directly, opposed to, contrary to, contradictory to, conflicting with, incompatible with. 8. Confrontation, noun. झगड़ा, मुकाबला करना. A hostile or argumentative situation or meeting between opposing parties. Synonyms: conflict, clash, brush, fight, battle, contest, encounter, head-to-head, face-off. 9. Verdict, noun. फैसला, ज्यूरी का फैसला. A decision on an issue of fact in a civil or criminal case or an inquest. Synonyms: judgment, adjudication, adjudgment, decision, finding, ruling, resolution. 10. Arbiter, noun. फैसला करने वाला, काजी. A person who settles a dispute or has ultimate authority in a matter. Synonyms: adjudicator, arbitrator, judge, umpire, referee, assistant referee, linesman, line judge. 11. Perils. खतरे से दोचार करना. The possibility that you will be hurt or killed or that something unpleasant or bad will happen. Synonyms: hazard, imminence. It is nothing less than a strong critique of the Chief Justice by his fellow judges as the long-simmering friction within the top judiciary finally comes out into the open. The dissenting judges have challenged what they call the solitary decision of one man, and they want the unbridled power enjoyed by the Chief Justice to be restrained. It may not be unusual for judges to have differences of opinion, but the remarks made by Justices Syed Mansoor Ali Shah and Justice Jamal Khan Mandakale in their detailed dissenting note on the court's ruling on elections for the KP and Punjab assemblies go beyond the norm. They have not only disputed the validity of the ruling but have also questioned the Chief Justice's discretion to reconstitute the bench. According to them, last month's proceedings, following the suo motu notice taken by Chief Justice Umar Atta Bandial on the delay in elections, stood rejected by a majority of 4-3, contrary to the 3-2 judgment announced by the reconstituted 5-member bench. The release of the detailed dissenting note on the eve of the hearing of the petition against the postponement of polls by the ECP, in violation of court orders, has turned the entire case upside down, worsening the existing state of anarchy. Many legal experts may not concur with the two judges that the suo motu action was rejected by the majority, but questions about the Chief Justice's power to constitute benches at will appear valid.
What is also being debated is the validity of his decision to take suo motu notice on the election issue. The dissenting note also brings into question the exercise of absolute power by the CJ. The controversy started after Justice Yahya Afridi and Justice Athar Minallah were not included in the reconstituted bench following their objections over the notice. The ruling itself did not come as a surprise, as the reconstituted bench changed the balance of opinion. Given that 2 other judges had recused themselves, the argument that 4 out of the remaining 7 judges had rejected the suo motu action has some rationale. Notwithstanding the validity of the majority ruling by the reconstituted 5-member bench, the Chief Justice's decision not to go for a full court on critical constitutional issues has created doubts in the minds of many over the impartiality of the top judge and widened the cleavage within the institution. It is not for the first time that the process of the formation of benches and the absolute power exercised by the top judge have been questioned, but the remarks of Justices Shah and Mandakale show a breakdown in institutional working. Concerns that there is a deliberate move to keep out the senior-most judges, and that critical constitutional cases are assigned to a particular set of judges have contributed to making verdicts controversial. It has been asked why Justice Qazi Faiz Isa, the senior Pune judge who will be Chief Justice in a matter of months, has not been included on these benches. An outspoken judge known for some landmark judgments, Justice Isa has been a strong critic of the arbitrary process of constituting benches. It is perceived that he has paid the price for his convictions, but that has not deterred him from speaking out. His exclusion from the bench in such a case is a sad reflection on an institution that is expected to set the highest moral and ethical standards. The dissenting note also brings into question the exercise of absolute power by the Chief Justice. The concentration of authority in the office of the Chief Justice has created distortions and raised doubts about the fairness of the judicial system. The increasing tendency of taking suo motu notice of political issues has drawn criticism from both judges and lawyers. As the judges asserted, the court cannot be dependent on the solitary decision of one man, the Chief Justice. They said, the power of doing a one-man show is not only anachronistic, outdated and obsolete but also is antithetical to good governance and incompatible with modern democratic norms. Some recent suo motu actions taken by the Chief Justice have indeed pushed the apex court into political controversy, leading to questions about institutional impartiality. It is not a good omen for the rule of law. Certain decisions have been seen as an attempt to rewrite the Constitution. Indeed, the collapsing democratic process and growing political confrontation have made the court a battleground for the 2 major rival parties. That has also drawn the court into political controversy, with each party expecting a ruling in its favor. It is then not surprising to see the judges become targets of criticism by those who disagree with their verdict. Most of the criticism may be unfair, but the current political polarization also requires the judiciary not to extend its mandate or play the role of arbiter in the power game. Unfortunately, some recent suo motu actions have done the opposite. This happens when the powers of decision-making are concentrated in the hands of one person. The growing divisions within the court are alarming, and there is an urgent need to reform the system and establish a collective decision-making process, particularly when it comes to suo motu actions and taking up cases that should be decided in political forums. Power vested in a single person has other perils, as we have seen in the past when some Chief Justices acted more like autocrats encroaching on the domain of other institutions. Some turned to populism for self-projection. All this has tarnished the image of the apex judiciary and affected public trust and confidence in the judicial process. The criticism from within must serve as a wake-up call for the institution to reform the system. The dissenting note may well reflect the sentiments of other fellow judges too. The chaos and the problems within the system highlighted by the 2 judges must be taken seriously to restore confidence in the legal system. The writer is an author and journalist. Published in Dawn, March 29, 2023. Subscribe our channel.
Dawn Vocabulary. youtube.com/@dawnvocabulary. ये उनके साथी जजों की जानिब से चीफ जस्टिस पर सख्त तनकीद से कम नहीं है, क्योंकि आला अदलिया के अंदर तवील अरसे से जारी कशमकश बिलाखिर खुलकर सामने आ गई है। इख्तिलाफ राय रखने वाले जजों ने उसे एक शख्स का अकेला फैसला करार दिया है और वो चाहते हैं कि चीफ जस्टिस को हासिल बेलगाम इख्तियारात को रोका जाए। जजों के दरमियान इख्तिलाफात कोई गैर मामूली बात नहीं, लेकिन जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह और जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने KP और पंजाब असम्बलियों के इंतखाबात से मुताल्लिक अदालती फैसले पर अपने तफसीली इख्तिलाफी नोट में जो रिमार्क्स दिए हैं वो मामूल से बालातर हैं। उन्होंने न सिर्फ फैसले के जवाज पर इख्तिलाफ किया है, बल्कि बेंच की तश्कील नो के लिए चीफ जस्टिस की सवाबदीद पर भी सवाल उठाया है। उनके मुताबिक गुज़िश्ता माह चीफ जस्टिस उमर अता बिंदियाल की जानिब से इंतखाबात में ताख़ीर पर लिए गए अज़ खुद नोटिस के बाद होने वाली कार्रवाई 4-3 की अक्सरियत से मुस्तरद कर दी गई, जबकि तश्कील शुदा 5 रुकनी बेंच ने 3-2 से फैसला सुनाया था। इलेक्शन कमीशन की जानिब से अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी करते हुए इंतखाबात मुलतवी करने के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत के मौके पर तफसीली इख्तिलाफी नोट के इजरा ने पूरे मामले को उलट पलट कर रख दिया है, जिससे मौजूदा अफरा-तफरी की सूरत हाल मजीद खराब हो गई है। हो सकता है कि बहुत से कानूनी माहिरीन उन दोनों जजों से मुत्तफिक न हों कि सुमोटो कार्रवाई को अक्सरियत ने मुस्तरद कर दिया था, लेकिन चीफ जस्टिस की मर्जी से बेंच तश्कील देने के इख्तियार के बारे में सवालात दुरुस्त मालूम होते हैं। इस बात पर भी बहस हो रही है कि इंतखाबी मामले पर अज़ खुद नोटिस लेने के उनके फैसले की सदाकत किया है। इख्तिलाफी नोट चीफ जस्टिस की जानिब से मुतलक इख्तियारात के इस्तेमाल पर भी सवाल उठाता है। ये तनाज़ो इस वक्त शुरू हुआ जब जस्टिस आफरीदी और जस्टिस अतहर मनल्लाह को नोटिस पर एतराज़ात के बाद तश्कील शुदा बेंच में शामिल नहीं किया गया। ये फैसला खुद हैरान कुन नहीं था, क्योंकि दोबारा तश्कील शुदा बेंच ने राय का तवाज़ुन बदल दिया। ये देखते हुए कि 2 दीगर जजों ने खुद को अलग कर लिया था, ये दलील के बाकी 7 जजों में से 4 ने अज़ खुद नोटिस को मुस्तरद कर दिया था, कुछ जवाज़ रखता है। तश्कील शुदा 5 रुकनी बेंच के अक्सरियती फैसले के जवाज़ के बावजूद चीफ जस्टिस के अहम आईनी मामलात पर फुल कोर्ट न जाने के फैसले ने बहुत से लोगों के जहनों में आला जज की गैर जानिबदारी पर शुकूक व शुबहात पैदा कर दिए हैं और इदारे के अंदर इख्तिलाफात को मजीद बढ़ा दिया है। ये पहली बार नहीं है कि बेंचों की तश्कील के अमल और सुप्रीम कोर्ट के जरिए इस्तेमाल किए जाने वाले मुतलक इख्तियारात पर सवाल उठाया गया है, लेकिन जस्टिस शाह और मंदोखेल के रिमार्क्स इदारा जाती कामकाज में खराबी को जाहिर करते हैं। इन खदशात ने कि सबसे सीनियर जजों को बाहर रखने के लिए जानबूझकर इक़दाम किया जा रहा है और ये कि अहम आईनी मुकदमात जजों के एक मखसूस ग्रुप को तफवीज़ किए गए हैं, फैसलों को मुतनाज़ा बनाने में मदद की है। अदालत ने इस्तिफसार किया है कि जस्टिस काजी फाइज ईसा जो चंद माह में चीफ जस्टिस होंगे, उन्हें उन बेंचों में शामिल क्यों नहीं किया गया। जस्टिस काजी फाइज ईसा एक बेबाक जज हैं जो कुछ तारीखी फैसलों के लिए जाने जाते हैं और बेंचों की तश्कील के मनमानी अमल के सख्त नाक़िद रहे हैं। यह समझा जाता है कि उन्होंने अपने अक़ीदे की कीमत अदा की है, लेकिन इसने उन्हें बोलने से नहीं रोका है। ऐसे मामले में बेंच से उनका इखराज एक ऐसे इदारे की अफसोसनाक अक्कासी है जिससे तवक्को की जाती है कि वो आला तरीन इखलाकी और इखलाकी मेआरात तय करेगा। इख्तिलाफी नोट चीफ जस्टिस की जानिब से मुतलक इख्तियारात के इस्तेमाल पर भी सवाल उठाता है। चीफ जस्टिस के ओहदे पर इख्तियारात के इर्तिकाज ने बिगाड़ पैदा किया है और अदालती निज़ाम की शफाफियत के बारे में शुकूक व शुबहात पैदा किए हैं। सियासी मामलात का अज़ खुद नोटिस लेने के बढ़ते हुए रुझान को जजों और वकला दोनों की जानिब से तनकीद का निशाना बनाया गया है। जैसा कि जजों ने जोर देकर कहा, अदालत किसी एक शख्स चीफ जस्टिस के अकेले फैसले पर मुनहसर नहीं हो सकती। उनका कहना था कि ए वन मैन शो करने की ताकत न सिर्फ गैर फरसूदा और मतरूक है, बल्कि ये गुड गवर्नेंस के भी मुनाफी और जदीद जमहूरी अक़दार से मुताबकत नहीं रखती। चीफ जस्टिस के हालिया अज़ खुद नोटिस इक़दामात ने सुप्रीम कोर्ट को सियासी तनाज़ात में धकेल दिया है, जिसकी वजह से इदारा जाती गैर जानिबदारी पर सवालात उठ रहे हैं। यह कानून की हुक्मरानी के लिए नेक शगुन नहीं है। कुछ फैसलों को आइन को दोबारा लिखने की कोशिश के तौर पर देखा गया है।
दर हकीकत ज़वाल पजीर जमहूरी अमल और बढ़ते हुए सियासी महाज आराई ने अदालत को दो बड़ी हरीफ जमातों के लिए मैदान जंग बना दिया है। उसने अदालत को भी सियासी तनाज़ा में धकेल दिया है और हर पार्टी को अपने हक में फैसला आने की तवक्को है। फिर ये हैरत की बात नहीं है कि जज इन लोगों की तनकीद का निशाना बन जाते हैं जो उनके फैसले से इख्तिलाफ करते हैं। ज़्यादातर तनकीद गैर मुनसिफाना हो सकती है, लेकिन मौजूदा सियासी पोलराइजेशन का तकाजा ये भी है कि अदलिया अपने मैंडेट में तोसी न करे, इक़्तिदार के खेल में सालिस का किरदार अदा न करे। बदकिस्मती से कुछ हालिया सुमोटो इक़दामात ने इसके बरक्स काम किया है। ऐसा इस वक्त होता है जब फैसला साजी के इख्तियारात एक शख्स के हाथों में मरकूज होते हैं। अदालत के अंदर बढ़ती हुई तकसीम खतरनाक है और निज़ाम इस्लाहात और इज्तिमाई फैसला साजी के अमल को कायम करने की अशद ज़रूरत है, ख़ास तौर पर जब अज़ खुद नोटिस लेने और सियासी फॉर्मों पर फैसला करने वाले मुकदमात को उठाने की बात आती है। किसी एक शख्स को तफवीज़ करदा इख्तियारात के दीगर खतरात भी होते हैं, जैसा कि हम माजी में देख चुके हैं जब कुछ चीफ जस्टिसों ने दूसरे इदारों के दायरा इख्तियार पर कब्जा करने वाले आमिरों की तरह काम किया था। कुछ ने खुद को पेश करने के लिए पॉपुलिज्म का रुख किया। इस सब ने आला अदलिया की शबी को खराब किया है और अदालती अमल में अवाम के एतमाद को मुतासिर किया है। अंदर से होने वाली तनकीद को इदारे को निज़ाम में इस्लाहात लाने के लिए बेदार करने की काल के तौर पर काम करना चाहिए। इख्तिलाफी नोट दूसरे साथी जजों के जज्बात की भी अक्कासी कर सकता है। कानूनी निज़ाम में एतमाद बहाल करने के लिए दोनों जजों की तरफ से उजागर करदा अफरातफरी और निज़ाम के अंदर मौजूद मसाइल को संजीदगी से लिया जाना चाहिए। मज़मून निगार मुसन्निफ और सहाफ़ी हैं। अख़ज़ शदा बतारीख़ 29 मार्च 2023। For more videos, subscribe our channel. Dawn Vocabulary. YouTube.com/@dawnvocabulary. Like, subscribe, share and comments.